Morning, friends. Now, after a long time, now we had a short break after completing your third chapter in political theory and basically 3 chapters in Indian constitutional working. So we are back again to political theory, and now we are going to start with chapter 4, that is social justice. Now, please understand that आप जो भी कंसेप्ट इससे पहले पढ़ रहे हैं इनके चैप्टर्स में, ये क्लैश करते हैं एक दूसरे से, राइट? और कहीं ना कहीं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से और मॉडर्न डेमोक्रेसी के आउटलुक से ही बताने की कोशिश करी गई है विद रेफरेंस टू सम ऑफ द थिंकर्स. नाउ व्हेन यू हियर द वर्ड जस्टिस, then basically in the context of your textbook or in the context of theory, justice involves well-being of people. Now इसकी crude understanding यहाँ से start हो सकती है कि when we considered कि एक fair treatment is very important and crucial for a society, we develop the concept of justice. Now it has long traditional history and patterns. In India it was by the name Dharma. Dharma means essentially a social order for the society to rule and the duties of the king, right? In China it was Confucius who started this, and he believed that the king should give deterrent punishment to the wrongdoers and hence justice will be preserved. लेकिन एसेंशियली जो इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक आई है, इक्वल कंसिडरेशन फॉर ऑल पीपल, इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग हिस्टोरिकल पैटर्न है. एंड नाउ दिस इज इन योर फर्स्ट पेज, एंड दैट इज इन द 4th century. It is in the 4th century BC in Greek, and it was basically by Plato. Now he is a really eminent political theorist, thinker in the entire subject of political science. His work are really commendable and they are really essential to understand many fruitful concepts, right? So Plato wrote down a dialogue, basically a debate, a dialogue between Socrates, his teacher, and 2 of his friends, right? And it was published by the name of, it came by the name of The Republic. The Republic के अंदर basically justice के concept को बहुत ही elaborately समझने की कोशिश करी गई थी. Now, so in that book, it's given in the reference of your textbook also, when it was asked to Socrates, when Socrates argued कि a person should be just, fair, and there should be a fair treatment given to all, and he should abide by the just means. So he was counter-argued, he was contradicted by one of his friends, and there he argued against Socrates कि जो unjust लोग होते हैं, the unjust people, वो लोगों की जो सोशल स्टेटस और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, या फिर उनकी जो सेल्फ हैप्पीनेस होती है, राइट, वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु वांट्स टू इवेट टैक्सेस, हु डजंट वांट्स टू पे टैक्सेस, और हु वांट्स टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, और वांट्स टू सप्रेस अदर काइंड ऑफ पर्सन, और हु जस्ट थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एंड ट्राइज टू रन बाय रन अवे फ्रॉम द लॉ. बट सोक्रेट्स आर्ग्यूड, एंड सोक्रेट्स एक इनलाइटनमेंट पीरियड में भी थे, क्योंकि सोक्रेट्स के जितने आर्ग्यूमेंट थे वो इनलाइटनमेंट और ट्रूथ से एसेंशियली रिवॉल्व करते थे. तो उन्होंने जब कहा था, सोक्रेट्स सेड टू हिम दैट इन लॉन्ग टर्म्स ये एसेंशियली हो सकता है कि आपको बेनिफिट करे, इन शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट करे. Okay, these things can benefit you in short term, while if I talk about the long term of a society, or the long term of how a society should run, then those decisions जो self harming है, या फिर those decisions जो community को सोच के नहीं लिए गए हैं, वो at a point जाके आपको भी harm करना चालू कर देंगे. So it's essentially destructive to each and every one's self. So you should not be selfish and you should abide by a just meaning ऑफ लॉ. और वहीं से कंसेप्ट डिस्कस होना चालू हुआ था कि जस्टिस होता क्या है, व्हाट इज एसेंशियली जस्टिस, व्हाट कम्स अंडर जस्टिस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आउटलाइन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ what is justice. So Socrates and Socratic dialogue by the name of Republic by Plato, this plays a essentially very important role in the understanding of justice. So this was about the introduction of justice. Thank you. If you like this video, please subscribe to Personal Tutors.